everyone, I welcome you all to the Concepts पढ़ाएंगे सबको सिखाएंगे campaign video, and in this particular video I'll be discussing about which is more important, the MOA or the AOA. So hope you know MOA stands for Memorandum of Association and AOA stands for Articles of Association. So these are two important documents with respect to the formation of a company. So which of these is more important? We'll be looking onto that aspect in this particular video. Do remember to subscribe to our channel and press on the bell icon so that you can stay tuned, stay updated, you can clear all your concepts and you can make your preparations 50% faster with us at iExamB. In case if you have any questions, any queries, you can contact us through the email ID through this particular phone number, or you can even visit our website for details. In this particular video, some of the important aspects which I'll be covering is what is MOA and AOA. So इनका मतलब क्या, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स का क्या मतलब है, सबसे पहले हम उसको देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के बीच का डिफरेंस क्या है. सो व्हेन वी अंडरस्टैंड व्हाट इज MOA, व्हाट इज AOA, फ्रॉम दैट वी विल बी कमिंग टू द वेरी आंसर ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू डॉक्यूमेंट्स. ओके, एंड व्हेन वी आर अवेयर ऑफ व्हाट दीज डॉक्यूमेंट्स आर, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दीज डॉक्यूमेंट्स, वी विल नेचुरली कम टू अंडरस्टैंड दैट व्हिच ऑफ दीज इज मोर इम्पोर्टेंट. सो इन दोनों में से कौन सा डॉक्यूमेंट ज्यादा जरूरी है हमें समझ में आ जाएगा जब हमने पहले दो क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर लिया है. ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दैट. सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से पहले जब मैं आपको बताने जाऊंगी क्या है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सो उसके पहले मैं तो ये बताना चाहूंगी कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि कंपनी फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप एक कंपनी बनाना चाहते हो, उसको जाके ROC के पास रजिस्टर करना चाहते हो, तो यू टू इंश्योर दैट यू आर getting these two documents prepared, the memorandum of association and the articles of association. Now looking on to the MOA, what does it stand for? So MOA can also be said as the charter of the company or the constitution of the company. So charter of the company, constitution of the company are the words which we can use for the memorandum of association. अब इससे हम उतना क्लियर नहीं हुआ क्या हो गया charter, what is charter, what is constitution of the company. So let's look on to the simplified aspects of those. So basic primary document to be framed and filed with the ROC, registrar of companies. So एक सबसे basic और primary document जिसको अगर आप कंपनी बनाने का सोच रहे हो तो आपको ये डॉक्यूमेंट जो कि प्राइमरी है, बेसिक है, उसको बनाना होगा, उसको ROC के पास फाइल करना पड़ेगा. और ये डॉक्यूमेंट क्या प्रोवाइड करता है? ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है सारी इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में. इट इज डिस्क्राइबिंग द वेरी पर्पस फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म. इफ आई एम गोइंग फॉर्म अ कंपनी, देयर मस्ट बी सर्टेन purpose for which I am forming it, and there are lot many informations with respect to the company I am going to form. So all those informations about the company and the purpose for which the company is to be formed, all those have to be detailed in this particular document, that is memorandum of association. Now it will be containing all the rules and regulations that will be governing company's relationship with outsiders. अब जो भी rules और regulations जो govern करेगी कंपनी के relationship को outsiders के साथ, that are all there in the memorandum of association. अगर मैंने एक कंपनी बनाया है, ठीक है, कल को जब मैं बिजनेस करूंगी तो मैं बहुत सारे लोगों के साथ एंटर करूंगी, रिलेशनशिप में एस्टैब्लिश होगा हमारा, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स में एंटर करूंगी. So while I'll be entering into those agreements and contracts, all the relationship of the company while entering into those contracts with the outsiders, they will be governed, those will be regulated by this particular document. Okay, it is defining the scope of operation of the company. Okay, so what it is defining, what is the scope, what is the purpose for which the company is formed, already I have mentioned. All those aspects have to be defined here. Okay, so anything the company cannot do which is beyond the scope of the things which have been detailed in this particular document. You can see over here, company cannot operate beyond the scope of the document. Why it cannot do over here? The question is, as the acts which are done beyond the scope are ultra virus and hence void. Ultra virus का मतलब क्या हो गया? Beyond the power. So company
को कुछ सर्टेन पावर्स है, कुछ सर्टेन उसके एम्बिट्स है, उसके अंदर रह के उसको अपने ऑपरेशंस को करना है, कोई भी काम करना है। अगर कंपनी उस स्कोप के बियॉन्ड जाके कोई भी एक्ट कर रही है, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द एक्ट्स व्हिच आर डिटेल्ड इन दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, देन दोज एक्ट्स विल बी कंसिडर्ड टू बी ultra virus beyond its past, and hence in that case it will be considered to be a void one. Okay, now it must contain certain content. So जो MOA है हम कहते हैं उसके certain contents होते हैं, मतलब कुछ चीजें उसमें होनी ही चाहिए। जैसे कंपनी का नाम क्या है, जैसे कंपनी जब फॉर्म होगी, रजिस्टर होगी ROC के पास, तो कितने कैपिटल से वो अपने आप को फॉर्म करने वाली है, व्हाट इज द ऑथराइज कैपिटल एंड ऑल दैट हैव टू बी देयर। अब जब कंपनी फॉर्म हो जाएगी वो कम्युनिकेट करेगी वेरियस पीपल से, वेरियस authority से, so that communication will be done at what address, the registered address, so that has to be detailed. So कुछ चीजें मैंने यहाँ mention किया है, but there are certain elements, contents that have to be there in this particular document, which is like the name clause, the registered office clause, the capital clause, the liability clause, ये सारे aspects को यहाँ पे इस document में, जो कि basic primary document है, जो कि company के scope को बताता है, वहाँ पे detail में mention करना है, ठीक है। And it should be in any form which is given in table A to E of schedule 1, and that basically depends upon the different kinds of company. Okay, so this is MOA. Now moving on to our next is the articles of association. Okay, तो हमने देख लिया मेमोरेंडम क्या है। जब आप एक कंपनी बनाने वाले हो तो उस कंपनी का कुछ नाम होगा, कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, so all those aspects that have to be covered in that particular document, without which the company cannot be brought into existence. Now once the company has come into existence, obviously it has certain internal management aspects to be taken care of, how internally the office will be taken care of, all those aspects are detailed, are regulated through this particular document, which is Articles of Association. So let's look on to that. So it is the second important document related to company's formation. So पहला important document क्या था हमने देख लिया, Memorandum of Association, ठीक है। जो memorandum important था हमने वो देख लिया। Now second important document memorandum के बाद है Articles of Association with respect to the formation of a company. Now this Articles of Association, it is containing the rules, regulations, bylaws, etc., which are important for the management of the company's internal affairs. See, this is what I was saying. कंपनी बन गई, ओके, उसका नाम ये है, रजिस्टर्ड ऑफिस ये है, कैपिटल क्लॉज ये है, सब कुछ हो गया जो भी बेसिक था कंपनी से रिलेटेड। बट अब उस कंपनी को चलाना भी तो है, मैनेज भी तो करना है। कैसे मैनेज करेंगे? डेली रूल्स बनाएंगे या कैसे मैनेज करेंगे उसके इंटरनल मैनेजमेंट को, ऑफिस को, एक्सेट्रा को। सो ये जो डॉक्यूमेंट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, इट इज कंटेनिंग ऑल द रूल्स, रेगुलेशंस, बाय लॉज which are very important with respect to the management of the company's internal affairs, day-to-day affairs, you can say. So it forms the basis that governs the relationship between whom the company and its members and the members inter से। ये क्या है? ये डॉक्यूमेंट जो है बेसिस है, जो कि गवर्न करता है किसके रिलेशनशिप को, कंपनी के उसके मेंबर्स के साथ, और जो मेंबर्स है उनका एक दूसरे के साथ। इट इज सबऑर्डिनेट टू द MOA and is thus governed by it. जो मेमोरेंडम है वो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है जो कि कंपनी अगर आप फॉर्म करने वाले हो उसके लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है हमने देख लिया। अब मेमोरेंडम के बाद जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो क्या है? आर्टिकल्स है। सो ऑब्वियसली आर्टिकल सब ऑर्डिनेट है। अब सब ऑर्डिनेट है तो ये इंश्योर करना है कंपनी को कि जब वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन फॉर्म कर रही है, बना रही है, देन एनी प्रोविजन विच इज कंटेन्ड इन द आर्टिकल्स दैट शुड नॉट बी कॉन्ट्रारी और कॉन्फ्लिक्टिंग विद दोज प्रोविजंस दैट आर देयर इन द MOA. It has to be in consonance. Then acts which are done beyond the AOA can be ratified by the shareholders. तो कोई भी काम जो कि डिटेल्ड है, मान लो कुछ चीजें हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में डिटेल्ड है, बट देन देयर आर सर्टेन एक्ट्स व्हिच आर डन एंड दे आर बियॉन्ड दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, सो इन दैट केस इट कैन बी रैटिफाइड बाय द शेयरहोल्डर्स। एंड हमने देखा था MOA में कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स थे, एलिमेंट्स थे, वहां पे होना ही चाहिए। सेम वे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है दैट इज बेसिकली प्रोवाइडिंग डिटेल्स विद रिस्पेक्ट टू द शेयर कैपिटल, हाउ द डायरेक्टर्स दे आर टू बी अपॉइंटेड, their remuneration, etc., how the meetings will be conducted, all these aspects that have to be taken care of in the articles of association. कंपनी बना लिया, उसको रन कर रहे, अभी हमें कब मीटिंग्स करने हैं, कौन से लोगों को हम डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, उनको कितने रेम्यूनरेशंस देंगे, all those aspects have to be taken care of by the articles of association, because articles of association is
taking care of the company's internal affairs, day-to-day management, okay? And it has to be in forms as given in table F to J of Schedule 1 of the Companies Act. So now we have come to know what Articles of Association is, what Memorandum of Association is. Based on these understandings, we can see the difference between these two documents. So यहाँ पे जो भी मैंने detail किया है with respect to the difference between these two documents, that is from our understanding of what these documents are, and so these are some of the differences between them. So one difference हो जाएगा based on their meaning. जो Memorandum of Association है वो fundamental document है, basic primary document है, that is containing what relevant information required for the incorporation or the formation of the company. What is articles? It is supplementary document which is related to the rules and regulations governing the company. Correct? Now the scope. So the MOA, it is defining the objects and the powers of the company. क्या object है जिसके लिए company form हुई, क्या powers है company की, वो सारा detail है. जबकि articles में rules और regulations जो कि day to day management of the company से related होगा, internal management of the company से related होगा, उसको वहाँ detail करते हैं. अब अगर हम status की बात करें तो MOA, it is subordinate to the Companies Act and articles is subordinate to the Memorandum of Association. So this point से related एक important चीज है जो हमारी Companies Act है, that is first and foremost. Then comes the Memorandum of Association, then comes the Articles of Association, then comes in any contract, agreement, etc. which the company enters into. So it has to be ensured that anything which is contained in the MOA, that is not contradictory to this Companies Act. Anything contained in the Articles of Association, that should not be contradictory to these two documents. And obviously agreements the company is entering into has to be in consonance with all these things. Companies Act is the first and foremost important thing, and then comes the MOA and the AOA. They are subordinate to the Companies Act because that is the law governing the companies. Now effect. So anything we have already seen, any act which is done beyond the scope of the MOA, that is ultra virus, that is absolutely void. However, in articles we saw those can be ratified by the shareholders in the meetings and all. Now relationship. Already we have seen MOA is defining the relationship between the company and the outsiders. If we talk about articles, it is governing the relationship of whom? Yes, the company and its members and also the members among themselves. Lastly, alteration. क्या कोई changes कर सकते हैं इन दो basic important documents में, जिसे हम बोल रहे हैं बहुत important है company के aspect में. So क्या alter कर सकते हैं, कोई changes कर सकते हैं इसके इन दो documents में? Yes, we can do alterations, we can make changes in these documents. ऐसा नहीं है कि आज हमने company form किया, इन documents को बनाया है, कुछ चीजें उसमें mention किए हैं, तो हम उसे change नहीं कर सकते हैं in the long run. With the growth of the business and with other aspects the company is going through while it is conducting its business, there might be the need of altering these documents, so that can be done. So there are certain compliances they have to be followed and then the alteration can be done. So if we talk about MOA, a special resolution that is required to be passed in the annual general meeting, and in many cases there is required that the approval of the central government that is taken. While if we talk about articles of association, by passing a special resolution, the alteration or changes can be made in this particular document. Okay, so we understood the difference also. Now we'll be moving on to the last question of our discussion in this particular video, which is which of these documents is more important, MOA or AOA? So hope you must have come to the conclusion कि कौन सा इनमें से ज्यादा जरूरी है. आपने देखा already जब हमने उसका मतलब समझा था इन दो डॉक्यूमेंट्स का, जब हमने उनका डिफरेंस देखा था कौन किससे सबऑर्डिनेट है, किसे पहले बनाना है, किसमें क्या मेंशन्ड है. अब आप एक अगर कंपनी बनाने वाले हो तो उसका पर्पस या ऑब्जेक्ट क्या है, उसका नाम क्या है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होगा. पहले आप कोई भी कंपनी बनाने वाले हो, पहले आप उसको इंटरनली उसके डे टू डे ऑपरेशंस को कैसे कंडक्ट करोगे वो डिसाइड करोगे, या पहले उसके नाम को, उसके पता को, उसके अदर एस्पेक्ट्स पहले डील करोगे. सो ऑब्वियसली द बेसिक डिटेल्स विथ रिस्पेक्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ इट्स नेम, एड्रेस, द कैपिटल विद विच इट विल बी registered, all those aspects, and then how the day-to-day affairs, the management of the company will be done, that has to be taken care of. So obviously based on the understanding of the concept what is MOA, AOA and the difference between them, we can come to the conclusion that obviously the Memorandum of Association, which is the
charter or the constitution of the company that is more important than the articles of association, because this articles of association is subordinate to the memorandum of association. It has to be in consonance with the memorandum of association, etc. Okay, so which of these is more important? It is the memorandum of association. So hope the concept was clear. Stay tuned to our channel so that you can prepare 50% faster with our exam.